Everybody. The spring and pulley shown in figure 12-E9 are light. Find the time period of mass m. In equilibrium position, weight will act downward. There will be a tension in this string T, T and T. Suppose in this condition extension in this spring is x dot. Weight of m mass is mg downward. For equilibrium condition, T will be equal to mg, and for this equilibrium, for spring, T will be equal to kx dot, or mg is equal to kx dot, or x dot is mg by k. Now, this mass m is brought down and left. At some instant, mass is x distance down from its equilibrium position. Total extension in spring when m is x distance down its equilibrium position. Extension will be x plus x dot. Suppose at this instant speed of this block is v. There will be a loss in potential energy. अगर हम होल सिस्टम देखें, पुली, मास एंड spring, there will be a loss in potential energy of mass m, gain in kinetic energy of mass m, and gain in potential energy stored in the spring. Loss in potential energy of mass will be mgx. Gain in kinetic energy of mass m will be half mv square.
gain in potential energy stored in spring. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर एक्स प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर एंड इनिशियल इज हाफ के एक्स डॉट का स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस 2x एक्स डॉट माइनस हाफ के एक्स डॉट का स्क्वायर 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस के एक्स डॉट माइनस हाफ के एक्स डॉट का स्क्वायर क्रॉस हो जाएंगे 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डॉट 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स and x dot is this much mg by k. mg by k 1/2 k x square plus mgx. This is gain in P. Total gain is equal to total loss. टोटल गेन जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ दैट इज हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में गेन हुआ हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgx एंड लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgx. mgx से mgs क्रॉस हो गया तो 1/2 mv square plus 1/2 kx square will be equal to 0. Differentiate with respect to t, half m 2v dv by dt plus half k x dx by dt is 0. K into 2x mv dv by dt plus kx dx by dt is 0. mv dv by dt is acceleration a plus kx into dx by dt is v, that is 0. v से डिवाइड कर दिया तो ma प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 और a will be minus k by m into x. a is directly proportional to minus x, hence motion is sh. a is equal to minus omega square x or minus k by m, x is equal to minus omega square x. Omega will be k by m को under root and time period is 2 pi by omega 2 pi m by k under root. This will be the time period.